बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। डू यू एग्री? स्टूडेंट्स, यस वी डू। स्टूडेंट 1, आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट। टीचर, यस श्योर। स्टूडेंट 1, मीडिया helps people to share knowledge of the world. Their feelings and opinions are expressed through it. Media attracts the attention of a very large audience. Have you noticed that the first thing we do soon after entering in the house is to switch on the television? Teacher, there is no doubt about it. अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स को रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज श्योर, यकीनी, सर्टेन, डेफिनेट। opinion, आरा, beliefs, express, जाहिर करना, reveal, attention, तवज्जो, heed, audience, नाजरीन, सामाईन, listeners, attract, कशिश करना, appeal, नोटिस, देखना, ऑब्जर्व। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। द फर्स्ट लाइन इज डू यू एग्री? क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? स्टूडेंट्स, यस वी डू। तलबा, हाँ हम इससे इत्तेफाक करते हैं। स्टूडेंट 1, आई वुड लाइक टू ऐड। तालिब इल्म नंबर 1, मैं इसमें इजाफा करना पसंद करूँगी। A bit more to it, थोड़ा सा मज़ीद। टीचर, yes sure। उस्तानी, हाँ यकीनन। स्टूडेंट 1, मीडिया helps people। तालिब इल्म नंबर 1, मीडिया लोगों की मदद करता है। to share knowledge of the world, दुनिया का इल्म बांटने में। स्टूडेंट 1, मीडिया helps people to share knowledge of the world। तालिब इल्म नंबर 1, अबलाग लोगों को दुनिया का इल्म बांटने में मदद देता है। Their feelings and opinions, उनके एहसासात और आरा are expressed through it, ज़राए इब्लाग के ज़रिए होता है। Their feelings and opinions are expressed through it, उनके एहसासात और आरा का इजहार ज़राए इब्लाग के ज़रिए होता है। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन, मीडिया तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाता है। ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस, सामाईन की बहुत बड़ी तादाद की। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, मीडिया बेशुमार सामाईन और नाजरीन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाता है। हैव यू नोटिस्ड? क्या आपने गौर किया? That the first thing we do soon after entering the house, घर में दाखिल होते ही जो पहला काम हम करते हैं is to switch on the television, वो टेलीविज़न को चलाना होता है। Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? क्या आपने गौर किया कि घर में दाखिल होते ही जो पहला काम हम करते हैं वो टीवी को चलाना होता है? टीचर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। उस्तानी, इसमें कतन कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश को पढ़ते हैं। डू यू एग्री? स्टूडेंट्स, यस वी डू। स्टूडेंट 1, आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट। टीचर, यस श्योर। द टीचर अलाउज फर्स्ट स्टूडेंट टू ऐड मोर टू द टॉपिक। Student 1, media helps people to share knowledge of the world. इसकी सिंपल इंग्लिश यूं की हमने कि the media helps us to get information about the world. Their feelings and opinions are expressed through it. Media attracts the attention of a very large audience. The media allows people to express their feelings. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house
is to switch on the television. Teacher, there is no doubt about it. There is a fact that we like to switch on TV right after entering our home. It shows the importance of the media. अब इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं. बॉक्स क्वेश्चन कुछ यूं है, What type of information does media provide? मीडिया किस तरह की मालूमात मुहैया करता है? So the very simple answer, media informs us about the facts around us. मीडिया हमारे इर्द गिर्द के हकाइक से हमें बाखबर रखता है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है.